Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. Today we have another topic for discussion and that is integrated theatre command, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है that India is going to have theatre commands in different parts of the country. So इस topic पे discussion रखेंगे जी. It can be asked in your paper 2 for CAPF. For security topic it is important and otherwise also for good to discuss with respect to SSB also. So ज़रूर इस सेशन को चेक करिएगा, काफ़ी अच्छी इंसाइट मिलेगी. As a part of Prahar series, we are bringing out the paper 2 topics with you people, and in the coming months we will be keep on bringing the topics which are very relevant for your paper. Right? So please सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को दबाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सबसे पहले न्यूज़ में था जी, हाई लेवल कमेटी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सर्विसेज एंड द मिनिस्टर्स has been formed for wider consultation on the creation of integrated tri services theatre command. तीनों सर्विसेज जो हमारे नेवी है, एयरफोर्स है और हमारा जो आर्मी है, इन तीनों की इंटीग्रेटेड सर्विसेज थिएटर कमांड खोले जाएंगे इंडिया में. कारण क्या जी? फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन मिलिट्री सेटिंग अप 5 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बाय 2023 with the well-defined areas of operation. The Chief of Defence Staff is working on redesigning existing military commands into theatre commands that will combine the resources and assets of 3 defence forces. So do remember this one. The process gathered steam after the appointment of the first Chief of Defence Staff and creation of Department of Military Affairs and the Ministry of Defence. One of DMA's role is to facilitation of structuring of military commands for optimal utilization of resources by bringing about jointness in operations. Jointness in operations including through establishment of joint theatre commands. तो किया क्या जा रहा है जी? तीनों एग्जिस्टिंग कमांड्स का अगर हो तो उनको कंबाइन करके, उनके रिसोर्सेज को कंबाइन करके, एसेट्स को कंबाइन करके वी आर ब्रिंगिंग आउट द थिएटर कमांड्स. और बाय 2023 वी हैव टारगेटेड लाइक 5 integrated theatre commands will be working, dividing the area of the country among these 5 theatre commands. तो what is theaterization? ये concept है to seeks to integrate the capabilities of 3 services like Army, Air Force and Navy and optimally utilize their resources for wars and operations. The idea behind theatre command system is to bring synergetic coordination between the 3 branches of the armed forces. तो मतलब इन तीनों ब्रांचेस में आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े और सिनर्जाइज हो सके. सिनर्जाइज मतलब तीनों की एनर्जी पॉजिटिव वे में एक ही जुट लगे. इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज बीन गिवन द मैंडेट टू स्टीयर द थिएटराइजेशन. इसमें सीडीएस को प्रॉपर्ली दिया गया था मैंडेट, पावर दी गई थी. स्टीयर मतलब स्टीयरिंग, थिएटराइजेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल करे और बनाने का पूरा शुरू करते. मॉडल विल बी इनबिल्ट flexibility to fall back on current command. Will have the inbuilt flexibility to fall back on the current command and control structures to eliminate possibility of country getting caught off guard by its adversaries during the crucial transition phase. So जब theaterization हो रहा होगा तो इनके पास इतनी inbuilt flexibility होगी, they can return back to the current command if there is a requirement at that time. So what is the proposed structure for integrated theatre command in India? India currently has 19 military commands, out of which 17 are service oriented, while both Army, Air Force have 7 commands each. Navy has 3. Right? ये सभी को समझ आ रहा है जी. आर्मी और एयर फोर्स के 7 commands each है, जबकि नेवी के 3 है. India also has a tri-service command at Andaman and Nicobar, besides the Strategic Forces Command which looks after the country's nuclear stockpile. ये भी पक्का याद रखिएगा और ये कहाँ पर है चेक करके बताइएगा. स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और ये ट्राई सर्विसेज कमांड हमारा अंडमान निकोबार में है. ये सारा प्रपोज स्ट्रक्चर क्या है जी? अकॉर्डिंग टू द करंट प्रपोजल देयर विल बी 5 थिएटर्स: नॉर्दर्न लैंड थिएटर, वेस्टर्न लैंड थिएटर, ईस्टर्न लैंड थिएटर एंड देन मैरीटाइम थिएटर एंड देन एयर डिफेंस. तो इस प्रकार नॉर्थ, एक वेस्ट और एक ईस्ट, फिर नीचे साउथ की जगह मैरीटाइम नाम रखा गया, 4 हो गए. और 5वां
सेंटर की जगह एयर डिफेंस सिस्टम. There will be a logistics command which will have the logistics of all the services under one person. There will be a training and doctrine command so that all services work under a common doctrine and have some basic common training. So इस प्रकार ये प्रपोज स्ट्रक्चर था. The Indian Army's Northern Command is the only single service command that will stay outside the scope of military's theaterization. जो Northern Command है that will remain out of the scope of military's theaterization. It is responsible for guarding the country's border with Pakistan and China in the north and is the nerve center of counter-terrorism operations in J&K. The first phase involves the creation of Air Defense Command and Maritime Theatre Command. पहले एयर डिफेंस कमांड बनाया जाएगा और मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाया जाएगा. एयर डिफेंस कमांड विल spearhead the country's aerial attack and will be responsible for defending Indian air space through multi-role fighters with all anti-aircraft missiles under its control. This will control air defense resources of all three services. It will be headed by a top 3-star Air Force officer based in Prayagraj. Maritime Command will be tasked to protect the Indian Ocean and India's island territories as well as keep the sea lanes free and open from any outside pressure. It will be headed by a top 3-star Indian Navy officer and will be based in Karwad, Karnataka. And it could also include the tri-service Andaman Nicobar Islands Command. क्या कारण है, यहां पर क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड थिएटराइजेशन ऑफ द मिलिट्री. ये है अपना, पहले तो हमने नॉलेज बेस बताया कि अब 5 थिएटर्स बनाने की सोची जा रही है. अब इसका कारण क्या. नंबर 1 तो हमें पहले से ही समझ आ गया, ऑपरेशनल सिनर्जाइज करना है. तीनों के ऑपरेशंस को सिनर्जाइज होगा तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा. दैट विल बी अ बिगर बूस्टर फॉर डिफेंस सिस्टम. सो 1999 में जब कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ था, heightened appreciation that the modern wars require huge synergy, क्योंकि तीनों फोर्सेस में आपस में सिनर्जी होगी, इंटीग्रेशन होगा, then they will be able to attack the, you can say, enemies very easily. The integration process would ultimately lead towards the unified military asset fused into one single command under one operational head who will be responsible for directing, controlling their services in a given situation. Number 1 is operation synergy. I hope everybody understands. You can give this example, Kargil conflict, that will add on your point also. एक justify करेगा आपके point को. दूसरा, economic benefits. Theatre command will also contribute to more streamlined cost and a leaner fighting force. बिल्कुल जी, इससे क्या होगा, हमारा जो forces अलग अलग 3 कमांड्स चल रही हैं, ये तीनों एक के अंडर आ जाएंगी. Annual defense budget do not always grow in line with the actual needs of the armed forces. The theatre command help reduce redundancies through systematic planning and redirecting a sizable portion toward maintenance and modernization of equipment and capabilities. Also, Joint Logistics Command would look at common contract management for the 3 services and be responsible for common inventories for maintaining reserves. सो सबसे मेन अगर एजेंडा बात करें तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे है. इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा और जो खर्चा वेस्टेजेस होंगी वो कम होंगी. लेकिन आप सिर्फ वेस्टेजेस के इस प्रकार नहीं लिखोगे, वहां पर लिखोगे एनुअल डिफेंस बजट डू नॉट ऑलवेज ग्रो इन लाइन विद द एक्चुअल नीड्स. सो द थिएटर कमांड वुड हेल्प रिड्यूस रिडंडेंसीज. रिडंडेंसीज मतलब रेपिटेशन, जो फजूल के ज्यादा खर्चा हो रहा है. एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होगी, redirecting sizable portion towards the maintenance. और आपको भी पता है, we need to be more efficient in this month. Already government has taken lot of steps जहां पर अपना डिफेंस में बजट कम करने की कोशिश कर रही है सरकार. कभी आपने सुना होगा टूर द ड्यूटी, अभी अभी रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया था कि हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे. उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ ये भी स्टेप एक थिएटराइजेशन ऑफ द मिलिट्री विल ऑल्सो बी लाइक टूवर्ड्स इकोनॉमिकली एक अपने पैसे बचाना एक तरह का अच्छी चीज है. वी नीड टू वर्क ऑन इट, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू सी द पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव. सो थिएटराइजेशन ऑफ द मिलिट्री इज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स आप अपने बजट को थोड़ा कम कर रहे हैं with the wastages which are happening in the defense part, or you can say where we can improve the efficiency for defense part. और जहां पर हमें खर्चा मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स में करना चाहिए उस खर्चे को उधर लगाया जा रहा है. तीसरा जी, मीटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. अगर हम देखें यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस,
They also work as per the theater command concept. US military, world's most powerful, has 11 combat commands. Similarly, Chinese People's Army have 5 theater commands, and with its Western theater handling the entire border with India. Pakistan has sought Beijing's help to reorganize its forces under same military concept. तो ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है थिएटर कमांड्स के अंडर काम करना, तो वी आर थिंकिंग अबाउट इट. अब चैलेंजेस क्या है? नंबर 1, टाइमिंग ऑफ थिएटराइजेशन. Already we are currently facing two front threat, a standoff with largest military in the world and the other adversary through new methods like drones, terror attacks. It may not be the right time to go through such a major apex level restructuring, as it may bring turbulence in time tested command structure and compromise operational effectiveness of Indian military during the intervening period. तो इस समय वैसे ही नाजुक हालात हैं, कहीं ना कहीं अटैक्स होते रहते हैं, एंड इफ वी आर बिजी विद दिस थिएटराइजेशन ऑफ कमांड देयर कैन बी अटैक. सो this is another point, and this will be a new thing. We have been working on this level in a different way initially. Inadequate capability. Maritime command accruing advantage of unity of command will have to be weighed against manageability of increased span of control. As Indian definition of the Indo-Pacific and the area of maritime interest has grown from eastern coast of Africa to northern Pacific up to Japan, the current personnel and staff have not been tasked and organized for it, so capability development of apex level needs to be worked out. Next one, integration of current systems. Problem will arise in integrating the establishments like BRO, Indian Coast Guard, both managed presently by Ministry of Defence, and Central Paramilitary Forces, which are run by Ministry of Home Affairs. So इनका integration already कभी हुआ नहीं. Clearly integrating the establishments like this one. Next one, parity in status and seniority. Parity in status and seniority of military officers with regard to a civilian counterparts can be an issue. Major challenges would be structure of the command, who will report to who within the tri-services, joint theatre command configurations, and who will have operational command over the personnel and machinery service chiefs or theatre commands. Concerns of Indian Air Force. The Indian Air Force is an offensive component of Indian military. It has national role besides synergizing with other services to contribute to national combat power. For comprehensive air battle with inadequate air resources, switching assets between operational commands of same service is much more effective than trying to do between integrated theatre commands with dedicated resources. So multi-domain operations is an art and technology not yet known to India, and it forms the basis of theatre commands. तो ये भी याद रखेगा जी. I hope everybody is very clear. Concerns of Indian Air Force. Parity in status and seniority will be a challenge. Integration of current systems. So conclusion क्या जी? The formation of integrated has been hailed as the next logical step in the process of defense reforms to synergize the capabilities and combat potential of the three services during war and peace. One of the most vital changes that may come about with the adoption of integrated theatre command, and though we would be how the three arms of the Indian military operate with one another, not as individual services but as the armed forces of the Union. To achieve a more efficient command and control configuration as is desired, it would be vital to ensure bureaucracy is kept to a minimum. तो ये था जी आज का टॉपिक. थोड़ा सा टेक्निकल था, बट आई विल से ट्राई टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स. चैलेंजेस क्या होंगे इंटीग्रेटेड अपना थिएटर कमांड पे, क्यों बनाए जा रहे हैं, मेन फंक्शंस आपको समझ आ चुके. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये 3 मेजर पॉइंट है. और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये यहाँ पर पेपर में बन सकता है. और ऑलरेडी कहाँ कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये दिस इज मेंट फॉर योर नॉलेज पार्ट. दिस कांट बी अ पार्ट ऑफ योर एसे. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज थिएटर कमांड. सो आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन. अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. जय हिंद एवरीवन.